Yes, students, our question number 18 says, as we have read, we have two partners, that is, one is Simran and another one is Reema, and their profit sharing ratio is 3:2. They have two capital accounts. One is fixed capital account. In this we have capital account balance of rupees 2 lakh each, and another is the balance of current account, that is 50,000 and 25,000. Interest on capital is 5% per annum, and they have a net profit of 3 lakhs at the year end. So we have to make the profit and loss appropriation account and pass the journal entries. So let's draw profit and loss appropriation account. For the year ended, you have to write over here, and I am just drawing the main answer format. So, particulars, amount, rupees. Particulars, amount, rupees. Balance we have by profit and loss account, we have a balance of 3 lakhs. This we have balance of 3 lakhs, and we have to give an interest on capital, and the capital we have is 2 lakh each. So interest on capital कितना होगा? I am using short over here, you have to write complete. Simran, Reema, that is 2 lakh into 5% interest rate, that is 10,000, and same will be of Reema. Total will be 20,000. So we have no other entry other than this. 3 lakhs minus 20,000, we get 2,80,000, and we have to distribute this 2,80,000 in 3:2. So this distribution is known as distribution of profit. So over here, so here we will balance it with 3 lakh and 3 lakh, and then we have to distribute this 2,80,000 among the partners to profits transferred to Simran, Reema current account. Because here we have two accounts, that is why we have to pass this entry of interest on capital, and we have a balancing amount that will be transferred to the current account. And if it is only fluctuating capital account method and there will be only one account, then we will be given only one capital balance. But here we are given two capital balances. One is of capital account and then is of current account. So that is why we have to pass any transaction other than addition or withdrawal of capital in this account. So this will be distributed among both the partners in ratio of 3:2, and we will get 2,80,000 into 3 divided by 5. Then we will get 168,000, and the balance over here, that is 112,000. And the journal entries will be, and you also have to draw proper format of journal entries that we used to do in class 11th. So the journal entry will be profit and loss appropriation account debit
to Simran current account and to Reema's current account. First entry will be profit and loss appropriation account debit to Simran current account to Reema's current account. Being interest on capital transferred to P&L appropriation account. कितना था हमारे पास अमाउंट 10,000, then will be 20,000. Second entry is the distribution of profit. Second entry will be profit and loss appropriation account debit to Simran's current account to Reema's current account. That is 168,000 and 112,000 and total is 2,80,000. Being profits transferred to partner's current account. Done. Now we will do another question, that is we have question number 22. It is the most important question. Yes. In this question, Vijay and Jay have a partnership and they have both contributed rupees 80,000 and 50,000 respectively. And the profit sharing ratio is 3:2 and interest on capital is 9% per annum. They have earned a profit of rupees 7,800. Show the profit and loss appropriation account. First of all, we have to check that we are given only a balance of capital account. Means no two accounts are made. It is a method used. The method used over here is a fluctuating capital accounts method. So only one capital account is used. This is one thing that we have to check. So let's start. Answer number 22. First of all, we will calculate, we will make working notes over here. Interest on capital will be, we will calculate the interest on capital of J. It will be 80,000 into 9 by 100. 9% interest rate था, that is 7,200. Then of Vijay, capital is 50,000 into rate of interest, that is 9%. We will get 4,200. Total interest कितना बन गया हमारे पास? 116. राइट इतना ही बना. $4,500 and this is 7. But we have profits of rupees 7,800 only. तो as you know, as we have done in this question, हमारे पास profit है 7,800 only.
लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज़्यादा आ रही है जो कि है 11700। तो जो ये ज़्यादा आ रही है तो हम ऐसे तो नहीं है कि यहाँ पे लॉस कैलकुलेट कर देंगे, राइट। तो हमारे पास एक मेथड होता है जो हम कहते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड। हम अपने प्रॉफिट्स को अपनी एप्रोप्रिएशंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब कि दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ लिसन केयरफुली। हम अपने प्रॉफिट्स को जितनी हमारी इस एप्रोप्रिएशन की अमाउंट बनती है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मतलब कि हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 7800 है, लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने वाली अमाउंट है 11700। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की रेशियो बना लेंगे 7200 और 4500. When we will do cutting and we will get a ratio of 8:5. ये 0 कट गया, 9 5 45, तो 9 के टेबल में 5 पे चले गया, और ये 9 8 72, तो 8:5 हमारी बन गई। तो हम अपने 7800 को 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इन दोनों का टोटल कितना बना, 30। देन तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 7800 into 8/13. This is of Jayesh, and which is interest on capital will be 7800 into 5/30. हम इन प्रॉफिट्स को इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जितना अमाउंट हमें हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए बन रहा था, हम उसी रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जितना हमारे पास एक्चुअल में प्रॉफिट्स है। तो 7800 into 8/13 we will get 4800, and 7800 into 5/13 we will get 3000. तो हम उतना ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन गया। अकाउंट क्रेडिट डेबिट, particulars, amount rupees, particulars, amount rupees। हमारे पास प्रॉफिट थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, that is we have profits of 7800 and we have to distribute in only the interest on capital। लेकिन हम इनमें नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 72 और 4500 में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये जो टोटल अमाउंट बनती है वो 11700 है, जो कि 7800 से ज़्यादा है। तो हम जो हमारे नए कैलकुलेट 7800 को जो हमने न्यूली डिवाइड किया था, न्यूली इन दोनों पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, हम उसी पार्टनर्स में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देंगे, एंड वी विल गेट नो नेट बैलेंस, एंड दिस ट्रांजैक्शन विल नेट बोथ द अकाउंट्स। तो यहाँ पे इन दोनों की अमाउंट आ गई। तो यहाँ पे ये हमारा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा विद नो बैलेंस इन दी, no profit distributed to the partners capital account।
सीधा उन्हें यहाँ पे जितने प्रॉफिट्स थे उतने ही प्रॉफिट्स उनको इंटरेस्ट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। वो और प्रॉफिट्स क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करे, क्यों हमने ये प्रोपोर्शन बनाया, क्योंकि उनके पास अगर प्रॉफिट्स है ही नहीं तो फिर देंगे कैसे, है ना। तो जितने प्रॉफिट्स हैं उतने उन्होंने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उतना दे दिया जितना प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट डे वी विल डू अनदर टॉपिक। प्लीज डू कंप्लीट द क्वेश्चंस ऑफ द होमवर्क क्वेश्चंस and see you tomorrow. Thank you.